Wait! Before we start, do you want a bundle of 30 printable Hindi PDF cheat sheets? Teaching you words and phrases for conversations for free? Then click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get access. उफ, आज तो मैं बहुत थक गई। आज दफ्तर में बहुत काम था तो घर आने में भी देर हो गई। स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पॉड 101 में। वेलकम टू आवर चैनल हिंदी पॉड 101। नमस्ते, मेरा नाम है आकांक्षा जैन। हाय, माय नेम इज आकांक्षा जैन। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ भारत के साधारण कार्य जीवन के बारे में। Pay close attention to the words and phrases I'm going to use. I'll be asking you questions afterwards. Listen carefully. भारत में ज्यादातर लोग सुबह 9 बजे अपने कार्य दिवस की शुरुआत करते हैं और शाम 6 बजे तक काम करते हैं। लेकिन मेरे दफ्तर का दिन शुरू होता है सुबह 10 बजे और खत्म होता है शाम 7 बजे। वैसे तो ऑफिस का समय तय होता है, लेकिन कई बार काम ज्यादा होने पर अतिरिक्त समय भी काम करना पड़ता है। मुझे घर से दफ्तर पहुंचने में 30 से 40 मिनट का समय लगता है। भारत में लोग आम तौर पर अपने दफ्तरों के लिए औसतन 30 मिनट से 1 घंटे तक की यात्रा करते हैं। दफ्तरों में पुरुष अक्सर औपचारिक शर्ट और पैंट पहनते हैं, जबकि महिलाएं साड़ी, सलवार कुर्ता या ऑफिस सूट पहनती हैं। लंच ब्रेक के दौरान सभी कर्मचारी मिलकर दफ्तर की कैंटीन में एक साथ भोजन करते हैं। कर्मचारी अक्सर घर का बना खाना लाते हैं और कैंटीन में साथ बैठकर खाते हैं। जो कर्मचारी घर से खाना नहीं लाते, वह पास ही के रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर खाते हैं। कर्मचारी चाय ब्रेक के दौरान ऑफिस की गपशप साझा करते हैं और सामाजिक मेलजोल बढ़ाते हैं। काम के बाद सभी अक्सर परिवार के साथ समय बिताते हैं। शुक्रवार को काम का माहौल थोड़ा हल्का रहता है, क्योंकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। लेकिन भारत में अभी भी कुछ ऐसे कार्यालय हैं जहां सप्ताह में 6 कार्य दिवस होते हैं और रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। कर्मचारी अक्सर शुक्रवार की शाम को सहकर्मियों के साथ पार्टी की योजना बनाते हैं। शनिवार और रविवार को सभी परिवार और रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं। That's all about work life in India. Now let's see how much you have understood. I have a few questions for you. First is, what time does the workday start and end for most people in India? A. 9 a.m. to 6 p.m. B. 10 a.m. to 7 p.m. C. 11 a.m. to 8 p.m. Second is, how do employees often spend their time during lunch breaks? A. Working at their desks. B. Eating in the office canteen together. C. Going out to restaurant with friends. Third is, what is the usual dress code for men in Indian offices? A. Casual t-shirts and jeans. B. Traditional kurtas and pajamas. C. Formal shirts and pants. And the last is, what days are commonly the weekly holiday in India? A. Friday and Saturday. B. Saturday and Sunday. C. Friday and Sunday. Keep your answers in mind. We will tell you about the correct options by the end of the video. Now, we will listen to the story again, but more slowly this time. भारत में ज्यादातर लोग सुबह 9 बजे अपने कार्य दिवस की शुरुआत करते हैं और शाम 6 बजे तक काम करते हैं। लेकिन मेरे दफ्तर का दिन शुरू होता है सुबह 10 बजे और खत्म होता है शाम 7 बजे। वैसे तो ऑफिस का समय तय होता है, लेकिन कई बार काम ज्यादा होने पर अतिरिक्त समय भी काम करना पड़ता है। मुझे घर से दफ्तर पहुंचने में 35 से 40 मिनट का समय लगता है। भारत में लोग आम तौर पर अपने दफ्तरों के लिए
औसतन 30 मिनट से 1 घंटे तक की यात्रा करते हैं। दफ्तरों में पुरुष अक्सर औपचारिक शर्ट और पैंट पहनते हैं, जबकि महिलाएं साड़ी, सलवार कुर्ता या ऑफिस सूट पहनती हैं। लंच ब्रेक के दौरान सभी कर्मचारी मिलकर दफ्तर की कैंटीन में एक साथ भोजन करते हैं। कर्मचारी अक्सर घर का बना खाना लाते हैं और कैंटीन में साथ बैठकर खाते हैं। जो कर्मचारी घर से खाना नहीं लाते, वह पास के रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर खाते हैं। कर्मचारी चाय ब्रेक के दौरान कार्यालय की गपशप साझा करते हैं और सामाजिक मेल जोल बढ़ाते हैं। काम के बाद सभी अक्सर परिवार के साथ समय बिताते हैं। शुक्रवार को कार्य का माहौल थोड़ा हल्का रहता है, क्योंकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है। लेकिन भारत में अभी भी कुछ ऐसे कार्यालय हैं जहां सप्ताह में 6 कार्य दिवस होते हैं और रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है। कर्मचारी अक्सर शुक्रवार की शाम को सहकर्मियों के साथ पार्टी की योजना बनाते हैं। शनिवार और रविवार को सभी परिवार और रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं। Let's go over the story in more detail now. Let's see how well you have comprehended by yourself. भारत में ज़्यादातर लोग सुबह 9 बजे अपने कार्य दिवस की शुरुआत करते हैं और शाम 6 बजे तक काम करते हैं। Most people in India start their workday at 9 in the morning and work until 6 in the evening. Let's start with the word Bharat used in the sentence. Here I want to tell you that in Hindi, India is called as Bharat by native Indians. Bharat, Bharat, Bharat. The word Zyadatar here means most. Zyadatar, Zyadatar, Zyadatar. The word log here means people. Log, log, log. The word subha means morning in Hindi. Subah, subah, subah. And sham means evening in Hindi. Sham, sham, sham. The word Karya Divas means work day. Karya Divas, Karya Divas, Karya Divas. The word Shuruat means beginning or start. Shuruat, Shuruat, Shuruat. And the word Kam means work. Kam, Kam, Kam. The number 9 is called No in Hindi. No, no, no. And the number 6 is called Chhe in Hindi. Chhe, Chhe, Chhe. लेकिन मेरे दफ्तर का दिन शुरू होता है सुबह 10 बजे और खत्म होता है शाम 7 बजे. But my office day starts at 10 a.m. and ends at 7 p.m. The word lekin here means but. Lekin, lekin, lekin. Daftar means office in Hindi. Daftar, daftar,
दफ्तर. We say दिन for day in Hindi. दिन, दिन, दिन. Just like shuru is called start and is called khatm in Hindi. Khatm, khatm, khatm. The number 10 is called das in Hindi. Das, das, das. And the number 7 is called saat in Hindi. Saat, सात, सात. वैसे तो ऑफिस का समय तय होता है, लेकिन कई बार काम ज्यादा होने पर अतिरिक्त समय भी काम करना पड़ता है. Although office timings are fixed, but sometimes if there is more work, then one has to work overtime. In Hindi, fixed is called तय, तय, तय. Sometimes is called कई बार, कई बार, कई बार. And overtime is called अतिरिक्त समय in Hindi. अतिरिक्त समय, अतिरिक्त समय, अतिरिक्त समय. मुझे घर से दफ्तर पहुंचने में 35 से 40 मिनट का समय लगता है. It takes me 35 to 40 minutes to reach office from home. There are two more numbers to learn here. First is 35, which means 35. 35, 35, 35. And another one is 40, which means 40. 40, 40, 40. भारत में लोग आम तौर पर अपने दफ्तरों के लिए औसतन 30 मिनट से 1 घंटे तक की यात्रा करते हैं. In India, people usually travel for an average of 30 minutes to 1 hour to their offices. The word aam taur used here is an Hindi adverb, which means usually. Aam taur, aam taur, aam taur. The word average is called औसत in Hindi. औसत, औसत, औसत. Also, the word apne used here is a Hindi pronoun meaning the word there. Apne, apne, apne. You must already be knowing what one is called in Hindi. It is called ek, 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 ek. And the number 30 is called 30 in Hindi. 30, 30, 30. दफ्तरों में पुरुष अक्सर औपचारिक शर्ट और पैंट पहनते हैं. In offices, men often wear formal shirts and pants. Here you can see the word formal means औपचारिक in Hindi. औपचारिक, औपचारिक, औपचारिक. And the word अक्सर is a Hindi adverb meaning often. अक्सर, अक्सर, अक्सर. Lastly, men are called पुरुष in Hindi. पुरुष, पुरुष, पुरुष. जबकि महिलाएं साड़ी, सलवार कुर्ता या ऑफिस सूट पहनती हैं. Whereas women wear saris, salwar kurta and office suit. So the first new word to learn here is mahilaएं, which means women. महिलाएं, महिलाएं, महिलाएं. We use the word sari and salwar kurta here as well. So I want to tell you here
that sari and salwar kurta are the traditional Indian wear which women wears often. Both of these garments are very popular choice among the Indian women for their comfort and versatility. And they come in variety of fabrics, colors, designs and patterns. And they are suitable for different occasions from daily wear to formal. This is how a sari look likes. And this is a salwar kurta. You can see I'm also wearing a sari for the office. Moving on, लंच ब्रेक के दौरान सभी कर्मचारी मिलकर दफ्तर की कैंटीन में एक साथ भोजन करते हैं. During the lunch break, all the employees eat together in the office canteen. Karmchari is the Hindi word for employees. Karmchari, karmchari, karmchari. The word sabhi is used for all. Sabhi, sabhi, sabhi. The word bhojan means food. Bhojan, bhojan, bhojan. The verb eat is called bhojan karna or khana khana in Hindi. Bhojan karna, bhojan karna, bhojan karna. Khana khana, khana khana, khana khana. Also, together is called ek saath in Hindi. Ek saath, ek saath, ek saath. Another new word we used here is dauran, which means during. Dauran, dauran, दौरान. कर्मचारी अक्सर घर का बना खाना लाते हैं और कैंटीन में साथ बैठकर खाते हैं. Employees often bring home cooked meals and eat together in the canteen. The word घर का बना खाना used here means home cooked meals. घर का बना खाना, घर का बना खाना, घर का बना खाना. Actually, the word khana means food or meals and the word ghar means home. Hence, ghar ka bana khana means home cooked meals. जो कर्मचारी घर से खाना नहीं लाते, वे पास के रेस्टोरेंट से खाना मंगाकर खाते हैं. Those employees who do not bring food from home order food from nearby restaurants. In Hindi, the negation that is not or no is called nahi or na. Nahi, nahi, nahi. So, here in this sentence, do not bring is said as nahi late hain in Hindi. Nahi late hain. Nahi late hain. Nahi late hain. So, if you want to say no in Hindi, you just have to say nahi. Next is the verb used for order in Hindi. It is called mangana. 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 Another word to learn here is pass, which means near in Hindi. Pass. 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 But in this sentence, we use nearby, which is called paas ke in Hindi. Paas ke. Paas ke. Paas ke. A special language tip for you here. The word restaurant is pronounced as restaurant in Hindi. So if you're in India and want to speak in Hindi, you won't call it a restaurant. Instead, call it restaurant. कर्मचारी चाय ब्रेक के दौरान कार्यालय की गपशप साझा करते हैं और सामाजिक मेलजोल बढ़ाते हैं. Employees share office gossips and socialize during tea breaks. The word chai means tea. So, chai break is called tea break. Chai break. Chai break. Chai break.
Next word to learn here is gupshup, which means gossip. Gupshup, gupshup, gupshup. We have already learned that office is called daftar in Hindi. But in this sentence, we used another word which also means office, and it is karyalay. 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 Another word to learn here in this sentence is samajik meljol, which means socialize. Samajik meljol. Samajik meljol. Samajik meljol. And the last word to learn here is साझा करना, which means share. साझा करना. साझा करना. साझा करना. The next sentence is काम के बाद सभी अक्सर परिवार के साथ समय बिताते हैं. After work, everyone often spends time with their family. Here we use the word baad, which means after. Baad. 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 Another new word used here is parivar, which means family. Parivar. 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 Moving on, शुक्रवार को कार्य का माहौल थोड़ा हल्का रहता है क्योंकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहता है. The work environment is a bit lighter on Fridays because Saturdays and Sundays are weekly off. The first new word to learn here is mahal, which means environment. Mahal. 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 Next word is halka, which means light. Halka. 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 Another word to learn here is avkash, which means day off or holiday. Avkash. 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 And the most important thing to learn here are days of the week names. But before it, you should know what a week is called in Hindi. Week is called saptaha in Hindi. Saptaha. 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 Here in this sentence, we use the word saptahik, which means weekly. Saptahik. 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 Now time to learn what Friday is called in Hindi. It is called Shukrivar. 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 Saturday is called Shanivar. 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 And Sunday is called Ravivar. 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 The next sentence is लेकिन भारत में अभी भी कुछ ऐसे कार्यालय हैं जहां 6 कार्य दिवस होते हैं और रविवार को साप्ताहिक अवकाश होता है. But there are still some offices in India where there are 6 working days in a week and Sunday is the weekly day off. There are a few new words in the sentence we just learned. So remember the meaning of karyalay, saptaha, कार्य दिवस, अवकाश and रविवार. We'll revise them later again. कर्मचारी अक्सर शुक्रवार की शाम को सहकर्मियों के साथ पार्टियों की योजना बनाते हैं. Employees often plan parties with their co-workers on the Friday evening. Again, there are 2 new words to learn here. First is सहकर्मी, which means co-worker. सहकर्मी. 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 And the next word is yojana, which means plan. Yojana. Yojana.
Yojana. And to make plan is called Yojana banana in Hindi. And the last sentence is शनिवार और रविवार को सभी परिवार और रिश्तेदारों के साथ समय बिताते हैं. Which means on Saturdays and Sundays, all spend time with their family and relatives. And the last word to learn in this last sentence is rishtedar, which means relatives. Rishtedar, rishtedar, rishtedar. So that was all about the work life in India we learned. Now that you already know the key phrases and vocabulary we learned in the story I told you, let us get back to the quiz questions. Hope you got the all answers correct by now. The first question was, what time does the workday start and end for most people in India? The answer of which is option A, 9 a.m. to 6 p.m. सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक. Next question was, how do employees often spend their time during lunch breaks? The correct answer to which is option B, eating in the office canteen together. Office canteen में एक साथ खाना खाते हैं. The next question was, what is the usual dress code for men in Indian offices? The correct answer to which is option C, formal shirts and pants. औपचारिक shirt or pant. The last question was, what days are commonly the weekly holiday in India? The correct answer to this is option B, Saturday and Sunday, Shanivar or Ravivar. How many of your answers were correct? I hope all of them to be correct. Now, let us review all the new Hindi words we learned in this video. भारत, ज़्यादातर, लोग, सुबह, शाम, कार्य दिवस, शुरुआत, काम, 9, 6, लेकिन, दफ्तर, कार्यालय, दिन, खत्म, 10, 7, तय, कई बार, अतिरिक्त समय, 35, 40, आमतौर, औसत, अपने, 1, 30, अक्सर, औपचारिक, पुरुष, महिलाएं, कर्मचारी, सभी, भोजन, खाना, भोजन करना, खाना खाना, दौरान, एक साथ, घर, घर का बना खाना, नहीं, मंगाना, पास के, चाय, चाय ब्रेक, गपशप, सामाजिक मेलजोल, साझा करना, बाद, परिवार, माहौल, हल्का, अवकाश, सप्ताह, साप्ताहिक, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सहकर्मी, योजना, रिश्तेदार. Great job sticking with us through the video. So you have learned plenty of new Hindi words today. These are going to help you to converse more in Hindi. And there was a lot you've learned about work life in India. Do tell us what was your favorite part and what surprised you the most. Remember to comment below and don't forget to like,
share, and subscribe for more great content like this. And if you want to be able to have the real conversation in Hindi with native speakers, just click the link in the description below and download our free PDF lessons, including all the essential phrases you need in daily life. Alvida, bye-bye. Now that you're finished with this lesson, don't forget, as a free bonus, you get over 30 conversation cheat sheets, but only if you sign up via the link in the description. You'll learn how to have flowing conversations and how to answer the most common questions. You can also print out these colorful cheat sheets to keep as physical study material. So don't miss out on this free gift. Click the link in the description and sign up for a free lifetime account to get your PDF cheat sheets.